गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो करंट अफेयर सेशन अच्छी समस्त को वेलकम। तो जमती हम देखिए कि जो भी हमारे जो रिसेंट आम जो करंट अफेयर चली तो फास्ट आम 131 ऑलरेडी कथा ही सारी नोट खुल नोट खुल ऑटोमेटिक आसो नोट खोल कौन कर आउ थे डिलीट कर नोट नुह ये सब डिलीट कर पड़ो कोड नोट खोल कोड कर ओके तो मैं करंट अफेयर जमी कथा होते तो देख पे तो गुड मॉर्निंग एवरीवन टिके टेक्निकल प्रॉब्लम थिला छाड़ तो जमती हमें देखिए कि प्रथम तो देखा जदि जो भी आम अमेंडमेंट होता 131 जो कि आप जो बिलटा आसाला जोटा कि डिफिट हो जाए हम तो जान कि जो 131 बिल अच्छी जोटा कि लोकसभा कौन है ना डिफिट हो ओके डिफिटेड इन द लोकसभा कौन पाई कौन मैंने ये जो बिल पास होगा एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल अमेंडमेंट बिल ताको पास करने आपको स्पेशल मेजोरिटी दरकार स्पेशल मेजोरिटी माने कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी हवा दरकार कि माने 50% प्लस 1 ऑफ द नंबर टोटल जेतिक आपनकर स्ट्रेंथ थिबो हाउस रो स्ट्रेंथ ता सहित आपण मानको कोन दरकार ता सहित आपण मानको दरकार कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ମାନେ ଯେତେ ବି ମେମ୍ବର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବାର ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଭୋଟିଂ ମାନେ ତାର 2/3 ହବା ଦରକାର ତ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ 131st amendment bill 2026 was defeated in Lok Sabha after failing to secure the mandatory 2/3 majority तो ওই जो 2/3 majority ଅଛି ତାକୁ secure କରିବାରେ କଣ ହେଲା सक्सेसफुल ହେଇ पारि नाही ଆପଣମାନଙ୍କର 131 bill ओके जो कहीं ये कौन हो गला ना ये डिफिट हो गला इन द लोकसभा बुझिपारे कि नहीं तापर आम आगू जा तो जमती कि व्हाट इज इट जानापी पड़ो जिते आपण कौन गोटे बिल होगा गोटे कन्स्टिट्यूशनल बिल होगा ऑर्डिनरी बिल हो प्राइवेट बिल हो मिनिस्टर बिल तो जेकोसी बिल हो जाए ना तो से जो बिल अच्छी यदि करंट अफेयर आसीगला मैंने ऑटोमेटिकली से चैप्टरटा से जिनसा आपण द बेस जिनसा इंपोर्टेंट हो फॉर फिल्म तो व्हाट इज इट आम जाना चाहूँ कौन ता माने द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज ए स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल 368 तो तुमको जो पचारे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विथ को आर्टिकल अच्छी फिल्म नाउ यू नो दैट आर्टिकल 368 टू ऑल्टर द फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन unlike ordinary bills these require a higher threshold of consensus to ensure that the basic structure and federal balance of the country are not changed arbitrarily okay तो जदि आप मैंने देखिए जोटा कि आप ऑर्डिनरी बिल अच्छी आपको सपोज कि अल्टरनेशन करार अच्छी कौन गोटे स्टेट टेरिटोरी को बाउंड्री को ऑर्डिनरी आप सिंपल मेजोरिटी पास हो
But जितने constitutional amendment bill अच्छी, that means कि something you are going to change in the constitution. For that you need to require special majority, which is 2/3 of the present, 2/3 of the people, no, sorry, but MMP, MLA MPs present and voting. ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 50% ପ୍ଲସ୍ वन ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଫେଡେରାଲ ମ୍ୟାଟର ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ଥିବ, फेडरल मैटर जदि इनक्लूड थी, फेडरल मैटर मीन जो भी मैटर जोटा कि आपन स्टेट रिलेटेड हेतिबो सेतिबा कहले आपन मानको 50% आपन मानकर रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड। ओके, 50% रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट इज आल्सो रिक्वायर्ड। बुझ परछ कि नहीं? चलो तापर हम देखिबा कि कौन कौन आर्टिकल इन्वॉल्व अछि जो बिल देना बतमला 368 व्हिच इज द मैंडेटरी इफ यू वांट टू amend the constitutional amendment bill. So through the Article 368, you can amend the Constitutional Amendment Bill. Grant Parliament the power to amend the Constitution and lays down the specific procedure for different types of amendment. तापर कौन अच्छी Article 81 and 82, which composition of the Lok Sabha, delimitation of the constituencies, which is एटे भी अपन मानकर मॉडिफाई करने पे चाहते कंपोजिशन को चेंज करके केते करा चाहते 850 नंबर ऑफ सीट से माने चाहते कि 850 नंबर दे जाओ बोली। ओके, 850 दे जाओ कोठे ना एमपी मानकर सीट लोकसभा रे। डिलिमिटेशन कमीशन भी एतरे पास करे पे से माने चाहते आ गोटे अपन आर्टिकल अछि गोटे कि 334 A introduced by the 106 amendment, which the 131st bill intended to amend to accelerate the women quota. तो women जो quota जोटा introduce already हे सारथिला केबे ना 106 of amendment 2023। तो ए जो बिल ता थिला एटा ऑलरेडी पास्ड मान जो अपन मानकर 2023 रे 33% reservation for the women has been passed subject to the condition they will do the जो census हे नहीं तो census पर एजेंसी implement करबार थिला, but now they are trying to implement the delimitation as well कि delimitation भी कर दबा जो भी हमर मानकर कोन अछि ना सब स्टेट अछि आ तो ताको डिवाइड करा जबो एमपी मानकर सीट को हमें बढ़िया पे चेष्टा करबो। तापर अपन कोन असला प्रोसीजर ऑफ द पासिंग द बिल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल केमती पास करे स्पेशल मेजॉरिटी हबो। ओके, must be passed by each house by majority of the total membership of the house and majority of not less than 2/3 of the member present and voting. टोटल माने सपोज कि अपन मानकर 240 मेंबर अछन, फॉर एग्जांपल मो कहूँ 240 दर टोटल हाउस रो स्ट्रेंथ अछि ताले 120 प्लस 1। ओके, 121 मेंबर फास्ट को पास कर दरकार जोटा कि अपन मानकर मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। टोटल जो हाउस रो स्ट्रेंथ अछि तारो नमस्ते, तो टोटल जो अपन मानकर नंबर रो हाउस अछि तो मेंबरशिप अछि तांकर कोन होबा दरकार 50% होबा दरकार। ता सहित हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट, तो जदि हम देखिबा कि सेही समय बिल पास होबा समय केते लोक प्रेजेंट अछंती इन दैट हाउस तो सेमानकर 2/3 होबा दरकार। ओके, सपोज कि 120 पीपल एबे प्रेजेंट अछंती यार केते होबो ना 2/3 प्रेजेंट, 2/3 लोक माने कोन होबा दरकार ना सेही समय को प्रेजेंट एंड वोटिंग 80 पीपल। बुझिबले कि नहीं? तो एटा होची अपन मानकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू अमेंड द to pass a bill if this bill is under the 368, which is constitutional amendment bill. State ratification is required. Yes, if this bill anyhow if this bill is affecting the federal structure, ताले जिन state और state center और state relationship हे गला तो सही सब जगह रे अपन मानकर कोन दरकार ना state ratification also दरकार। Since 131st bill affected the representation of states in parliament, article 81 82 जोटा कि अपन डिलिमिटेशन को करे पे चाहते, तो दैट इज व्हाई हियर स्टेट रैटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एट लीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर रिसीविंग प्रेसिडेंशियल असेंट। तो एट लीस्ट अपन मानकर 1/2, ओके, 1/2 द स्टेट अपन मानकर दरकार कोन अछि लेजिस्लेशन बिफोर रिसीविंग प्रेसिडेंशियल असेंट। तो जदि अपन देखिले कि कोन कोन दरकार फर्स्ट अपन मानकर स्पेशल मेजॉरिटी, सेकंड नो जॉइंट सीटिंग, so there is no provision for the joint sitting if it is constitutional amendment bill. Key feature of the 131st amendment bill कौन key feature थिला? The first होची expansion of the Lok Sabha, propose increasing the total seat from 543 to 850 to reflect demographic changes. So basically से कहउछन कि हमरो जो basically जो हमें देखिबा there are MPs
who represent around 45 lakhs population. There were also MPs who represent around 6 lakhs of the population. So when we're talking about the representative, so one vote for every individual and tamangar equal haba darkar for the representative. But there is inequality if you think about the distribution. But here the problem is, in case they are telling कि अपन मानकर total ऊपर यदि हमें देखिए कि 50% सीट अपन मानकर increase करूँ, but problem है कि absolute number there is a change. Absolute number यदि अपन मान देखिए तो absolute number सेठी change हो. For example, suppose हमने ओडिशा, ओडिशा रे हमरो जो member of parliament थे there 21 people, right? 21 तो एटा को भी change करा है कहते 29 रे. तो ये जो अपन मानकर 8 number of changes है that doesn't matter. But यदि हमें उत्तर प्रदेश कथा करबा, now around 84, but now it is changed to 120. तो imagine करो तो जो माने हला हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स, हिंदी हार्टलैंड स्टेट माने कोड़ा यूपी हे गला, अपन मानकर बिहार हे गला, अपन मानकर राजस्थान हे गला. And again these states can be easily motivated by the religious propaganda. तो सही जगह कौन हबो ना एठी अपन मानकर सीट अधिक हे जाउची. तो कोठी ना कोठी जो अपन माने कहउचंती कि डेमोक्रेसी हमर अछि, यूनिफॉर्मिटी हम आनिबो. बट सदर्न स्टेट रे because they have implemented better family planning program, they have implemented good governance, effective governance, that is how they are able to achieve कि भाई हमर जेते की population थिले population को हमें केमती control करबा. But some state who has worked hard to achieve the population control, who control the population, so you are punishing them because of this delimitation. This is the southern state as state. Kerala he gala, Tamil Nadu he gala. Tamil Nadu फिर भी there is a 44% increment, but बाकी सब state में problem. But absolute number there is a change. तो सब भाई delinking from census. तो देखो प्रथम जतबेले कोन हेतिला ना एमते चेंजेस हे चलुतिला. तो हिंदी हार्टलैंड रे ऑलरेडी अपन मानकर नंबर ऑफ सीट वाज मच मोर देन द सदर्न. तो सब भाई 1973 रे जो डिलिमिटेशन हेतिला ताको फ्रीज करा हेतिला. इवन कि 2002 रे भी जो डिलिमिटेशन हैला सेटा केवल इंटर बाउंड्री चेंज करा हैला, नॉट कि सीट एलोकेशन करा हैला. बट एठी से मन कहउछन कि सीट को एलोकेशन करा जबा. ओके, तो तापर डीलिंकिंग फ्रॉम सेंसस माने sought to allow delimitation based on pre-2026 data, specifically 2011 census, to enable the women quota by the 2029 election. Uniform reservation aim to implement 33% quota for the women in Lok Sabha and state assemblies immediately after the new delimitation. The new delimitation for it कौन हम ना 33% अपन मानकर लोकसभा रे भी दिया जबो, स्टेट असेंबली रे भी हमर दिया जबो. बट हम ओडिसा रे ऑलरेडी 33% अछि नै, ओडिसा रे ऑलरेडी अछि कि नै. तो ओडिसा गवर्नमेंट सेटा अछि, बट फिर भी सब स्टेट एटा को इंप्लीमेंट करा जबो. ओके, तो एथरे गोटे जिंस अपन मन देखंतु कि हमको रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इज नाउ इज रिक्वायर्ड, इट नीड फॉर दिस आवर. व्हाई? बिकॉज़ 50% of the population dependent on the 50% of the population in India were women. So women मानकर population केते अछि बे 50%. ता सहित कि जो भी अपन मानकर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हे जाय छै, जोटी कि अपन मानकर many state that is 33%, there is 50% of the reservation. Also we can criticize कि there is sarpanch, but that is correct. But effective governance is better where female representatives are there. When people are getting elected or female are being sarpanch or president in particular panchayat, their capabilities or their performing of the governance is better than the other areas where male were the representatives. So कोड ना कोड important तो अच्छी की female मन को reservation दिया जाए. Then why for the reservation? कहीं के reservation ही करा हो, why don't they come? कहीं ना equality अच्छी तो female male. तो हमने देखो जोटी भी अपन को काले भी कॉल भी हम जो nepotism कहते ना, nepotism is present in Bollywood, but the best, so the highest number of nepotism is present in Indian politics only. और जो भी female माने, if they are female or candidates, they are already belong from a affluent family or a privileged family or a family who is already being into this procedure or being so politically they were more active before. Otherwise, ki a normal female, they are not coming into politics. Fine, so that reservation is required. Recent failure of the bill, कौन by bill that the vote, the vote 298 members voted in favor while 230 voted against.
while it achieved at simple majority, it fell short for two-third majority, approximately 352 votes required if 528 were present. So required कहते ना तो 352, but only 298 vote they got. That is a defeated. Opposition stance on opposition leaders argue that bill was an attack on the constitution because it linked women's right to controversial delimitation process that could alter India's political structure. देखो एई जिनस से बारंबार कहउछन बिकॉज़ कि एबे जो भी आपन रूलिंग पार्टी अछि दे आर टॉकिंग अबाउट कि women reservation, we wanted to give women reservation, but opposition did not let pass this bill. That is not correct because already 106 constitutional amendment act was passed and everybody supported that act for the reservation, the favor of the reservation of the women. But ethi kon achi, ethi which leader someone कहउछन कि because the controversy between the delimitation process, so you are going to pass women's reservation through this process, like a disguise where अपन pass करे पे चाहते हैं, which is already controversial. Why? Because if the number of the MP seats will increase in the Hindi heartland, for example, अपन मानकर उत्तर प्रदेश है गला, for example, अपन राजस्थान है गला, बिहार है गला, तो कोट ना कोटी, don't you think that कि north वाला जो population अच्छी, but north वाला जो state अच्छी, northern state is going to more overemphasize but northern state पर बेसी already because of the Uttar Pradesh most means highest number of MPs elected from the Uttar Pradesh. That is why already they are having a upper hand. Okay, so एबे imagine करो कि basically seat दिया जो उधर कोटी ना कोटी से जो state अच्छी से माने ही हमारा माने हमारा कौन parliament है गला बाप माने तो democracy को कोट ना कोटी impact पकेगा. तब बोलो तो outcome कौन ला ना the bill was stalled and the speaker adjourned the house following posted by the NDA leadership. तो छड़ो. तब implication कौन ला reservation now unlikely to implemented for the 2029 general election as original 106 amendment mandate waiting for the post 2026 census. So originally जो जिनसे अपन मानकर 2023 रे पास हेतला सेटा गोटे जिनसे हेतला कि census post 2020 census ପରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଜିନିଷ को କରିବେ ତ ପାଇଁ कि मे बी रिजर्वेशन जोटा 2029 इलेक्शन थिला जनरल इलेक्शन हबाको थिला सेथरे लागि न पारे. The freeze on the Lok Sabha seat based on the 1971 census will continue maintaining the status quo on regional representation. So delimitation तो हबा दरकार किंतु जो basis रे ସେମାନେ delimitation କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଛନ୍ତି somewhat that is not acceptable to the every state. So delimitation किंतु require for our country. Why? Because मैं आपन के कहली कि बहुत सारा एमपी अछंती जो माने बेसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करछंती, बहुत सारा एमपी अछंती जो माने कम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करछंती. तो कोड में कोड देयर इज नो इक्वालिटी ना, तो डिलिमिशन दरकार, बट द वे दे आर गोइंग टू डू द डिलिमिशन प्रोसेस दिस इज नॉट करेक्ट. फाइन, चलो तब देखिए वुमेन रिजर्वेशन कांट वेट कौन ପାଇଁ का वुमेन रिजर्वेशन कांट वेट तमे कहउछन कि नाही 2029 ले भी हबनी ता पर 5 इयर्स लागि जबो कि नै, तो सेते वुमेन रिजर्वेशन वेट कर परिबो नाही. इमीडिएट इम्प्लीमेंट वुमेन कोटा ऑफ इंडिया जोटा कि अपन मन करबे इम्प्लीमेंट हे परिबो नाही. देखो जदि हम देखिबे कि द आर्गुमेंट फॉर इमीडिएट रिजर्वेशन सेंटर्स ऑन द रिप्रेजेंटेशन गैप, द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हाई फीमेल वोट टर्न आउट एंड लो फीमेल प्रेजेंस इन लॉ मेकिंग बॉडीज. तो जदि हम देखिबे कि वोटर मानकर संख्या फीमेल मानकर जो वोटर मानकर संख्या अछि सेमानकर संख्या कोट ना कोट इंक्रीज होछि वेयर इज लो फीमेल प्रेजेंस इन द लॉ मेकिंग बॉडीज बहुत कम. जदि आपण माने देखिबे ना स्टेट लेजिस्लेटिव मानकर अपन देखिबे ओनली 9% स्टेट लेजिस्लेटिव फीमेल अछंती आ जदि हां किंतु लोकसभा रे अराउंड 13 to 14% फीमेल अछंती. ओके, तो सेटा के कोड ना कोड जदि देखिए वोटर मानकर संख्या इंक्रीज हेबा सत्ते कोन होची ना आपण लॉ मेकिंग जगह रे फीमेल मानकर प्रेजेंस कमी जाउची. इट पोजेस दैट द करंट पॉलिटिकल सिस्टम इज नॉट meritocratic but governed by networks and social capital that symmetrically exclude women, requiring a legislative mandate to break this cycle. तो जो भी political system अच्छी से कोट ना कोटी मेरिटोक्रेसी ऊपर डिपेंड करूनी कहीं फीमेल आर कौन इंफीरियर ना फीमेल मान को पाखरे सेटिक टैलेंट नहीं टू बिकम ए रिप्रेजेंटेटिव दे हैव आल्सो इक्वल टैलेंट. बट ता पर डिपेंड न करिकि कौन कोजना सोशल कैपिटल आउ एक्सक्लूड वुमेन मानक से एक्सक्लूड करछि रिक्वायरिंग ए लेजिस्लेटिव मैंडेट टू ब्रेक दिस साइकिल. तापर असला डाटा एंड स्टैटिस्टिक ऑन वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन. हम स्टैटिस्टिक देखिबा देखो
So कोर्ट ना कोर्ट national and state disparity, women constitute only 14 to 15% of the parliament and average 9% in state assemblies, despite being nearly 50% of the population. तो ये सब डाटा को आपण माने कलेक्ट करेंगे जो भी आपण माने न्यूज पेपर पढ़ुचंती बा क्लासेस रु पाउचंती ए डाटा को गोटे करंट अफेयर कॉपी रे सब जगह लिखबे चारटा कॉपी आपण माने करे पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 तो जो डाटा मिलिबो ताको आपण सेही कॉपी हिसाब रे लिखिबे सो दैट कि आपण माने को इजी हबो वंस आपण माने प्रीलिम्स क्वालिफाई हे गला मेंस बेलु को आपण माने को इजी हबो कि आपण माने डाटा को सेठी रिप्रेजेंट करि पाबे तापर कोन ना वोटर एजेंसी इन सेवरल इंडियन स्टेट फीमेल वोटर टर्नआउट now equals or surpasses than men तो जति कि पुआ माने वोट करछन तांको सब समान हेसलानी और तांको अधिक हलानी signaling high political awareness without corresponding leadership roles that means कि तांको कुछ leadership तो रोल मिलुनी that means समान they are not elected कि समान elected ही कि आसुनांती एज ए केमती भाव रिलेटेड है एमपी हेबा कि एमएल हेबा तो रिप्रेजेंटेटिव से है ना दिबा से माने इलेक्ट हे कि आसुना बट तांको पाखरे कोठी ना कोठी कोन अछि ना सेमानक पाखरे एबे अवेयरनेस हे गला कि पॉलिटिकल अवेयरनेस नाउ इज गेटिंग इंक्रीजिंग इन द फीमेल्स then panchayat raj success reservation of the local has already been transformative with women leaders prioritizing health water and sanitation. Global benchmark, India 14% representation in the Lok Sabha falls significantly short of global benchmark and democratic ideas of proportional representation. जो proportional representation अच्छी जोड़ा कि democracy का गुटे idea सेटा कि धीरे धीरे कौन ला erode हवा को लगी ची. तापर कौन अच्छी ना why women reservation cannot be delayed faster closing the structural gap. Voluntary measures where the political parties have failed. Structural exclusion requires a structural solution. Link mandatory quotas. देखो why mandatory quota is required if it will be left to the parties कि भाई पार्टीज मान को डिसाइड करे पे बीजेपी हे गला तृणमूल कांग्रेस हे गला बीजेडी हे गला तो लेट देम डिसाइड कि से माने बेसी टू बेसी फीमेल मानन को आनंतु जोडे कि रिप्रेजेंटेड बट दे हैव फेल्ड राइट वॉलंटरी दे आर नॉट ब्रिंगिंग फीमेल कैंडिडेट को आनंती बा फीमेल मान को पार्टिसिपेशन दे आर नॉट इंक्रीजिंग इन देयर कोठी ना कोठी दे आर नॉट इंक्रीजिंग इन देयर पार्टी so because of that हमको कौन दरकार ना structural solution जोड़ा कि mandatory quotas reservation दरकार which will be mandatory upon these parties again कौन ना changing policy priorities evidence from local governance shows women leaders shift focus to central human development issues like education हे गला हेल्थ केयर हे गला तो एई सब जगह रे कोन हबो ना वुमेन माने को बेटर पॉलिसी ए जिंसो काने पे चाहछन जदन मेन माने के जिंसो देखुई नहांते ताबरे catalytic role model effect seeing women in authority challenge the entrenched social norms and create a pipeline for future young leaders जदी जेमति कि एबे अपन माने को इमेजिन करो कि एबे जने सपोज कि क्रिकेट खेले पे गोटे जोडे चाहूतिला 10 वर्ष आगुरो बट तार पेरेंट्स माने कोन कहउतिले क्रिकेट खेले कौन हम क्रिकेट खेल कौन करूँ कौन चित्र आप कैरियर अच्छी जहाँ भी अच्छी बट नाउ कि आप जो इंडिया जो वुमेन क्रिकेट टीम है ना सी कौन है ना विश्व कप जीतिक आसला वर्ल्ड कप जीतिक आसला ताने कौन ना कोटी नाउ इफ एनी गर्ल और एनी यंग फीमेल सी वांट्स टू परस्यू हर ड्रीम और वांट्स टू फॉलो हर पैशंस देन सी वांट्स टू कि भाई मु खेलिबी क्रिकेट तो जते भी आप भावନ୍ତୁ केते मात्रा रे भी तार जो पेरेंट्स थे आगु जते मना करथिले टिके ना टिके तो माने कोन चेंज होबो तांको माइंडसेट यस फीमेल आर डूइंग एक्स्ट्रा और डूइंग बेटर इन क्रिकेट अदर देन मेन हमर मेन वाला भी क्रिकेट स्पोर्ट कुछ खराब नो दे आर आल्सो डूइंग गुड बट आई एम जस्ट टेलिंग कि फीमेल माने को परफॉर्मेंस एते भलो नथिला बट दैट हैज बीन डेवलप्ड तो कोड ना कोड एटा कोन बना तांको पई गोटे रोल मॉडल क्रिएट करबो इफ वन रिप्रेजेंटेटिव फीमेल in a normal background and she is doing very good or she became MP and brought lot of changes which is necessary for the society तो कोड ना कोड जो भी एस्पिरेंट्स मान अछंती बा कोड ना कोड जो भी फीमेल मान अछंती जो माने चाहते आगो को बढ़िबे पई भलो करिया पई से मानकर बेनिफिट हबो ही हबो से मानको कोड ना कोड गोटे रोल मॉडल मिलिबो तापर अपन मानक असले लेजिटिमेसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस a representative democracy must reflect its people under representation weakens the inclusiveness legitimacy of the states and parliament तो जो हमें सब बड़े कथा कहते हैं सबका साथ सबका विकास तो when we are having 50% population who are women without their support without them including into the law making bodies how can you tell that inclusiveness is there
Okay, again, rising aspirations, a woman enter the workforce and higher education in second number. Delaying political representation lead to systematic frustration and disengagement. So जब हमें political representation तक दबानी तो कोड ना कोडी frustration हवा और disengagement हवा. Okay, तापर आसला कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नारी शक्ति बंधन अभियान. तो 106 वाला 206 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन कौन थिला सेटा भी आपण मानकर भी इंपोर्टेंट हे गला जेहेतु एटा आपनकर करंट अफेयर आसीची ताको भी टिके आपण मानको पढिया पय पडो ना. amendment passed in 2023 remains the primary framework for the reservation, though its implementation is currently stalled. Why? Because there was a provision when this is going to implement in 2029 general election after the 2026 census. Okay, तापर देखो, it mandates 1/33% reservation for women in the Lok Sabha, state legislative assemblies and Delhi assembly. The reservation is provided for a period of 15 years which can be extended by the parliament. तो एबे जो करंट रिजर्वेशन दिया जिवो 15 इयर्स पर है तीनोटी आपनकर 3 टाइम्स जनरल इलेक्शन पाइगा तापर मे बी इट कैन बी एक्सटेंडेड लेटर. अगेन internal quota kon achi na it includes a sub quota for women belonging to scheduled caste or scheduled tribe within the 33%. so 33% is the general women ta bhitar puni scheduled caste or scheduled tribe man ko find the internal quota was given. So census linkage, the controversial clause state that reservation will only come into effect after delimitation is carried out following the first census conducted after 2023 act. माने 2023 रे पास है ना तापर जतले आपनकर पास डिलिमिटेशन हबो बा सेंसस हबो तापर ही जाय के अपन मानकर कोन हबो लाइसेंस कैरीड आउट हबो तटा कि 2026 रे सेंसस रो पर ही हेतरि. रोटेशन ऑफ सीट्स, रिजर्व सीट्स विल बी रोटेटेड टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर एवरी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज. जते तरह अपन मानकर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हबो तापर एवरी कॉन्स्टिट्यूशन को रोटेशनल जिंस हेतरि. चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ डिलेड रिजर्वेशन. जदि एबे रिजर्वेशन डिलेड हबो कमाइना सिधु आपण मानकर 131 जो बिल थिला डिफीटेड इन द लोकसभा तो रिजर्वेशन एबे डिले हबो. तो जो डिले हबो तापर कोन कॉन्सिक्वेंस हबो. फर्स्ट होची वाइडनिंग रिप्रेजेंटेशन डेफिसिट. So delaying in implementation until after the 2027 census means another generation of women excluded from the 2029 general election. तो 2029 रो जो जनरल इलेक्शन हबार थिला सेठी आपण मानकर कोटाटा कोन लागि थांता एबे किंतु सेटा लागिबो ही नहीं. एंट्रेसिंग मेल गेट कीपिंग विदाउट कोटा पॉलिटिकल पार्टीज कंटिन्यू टू एक्ट एज गेट कीपर्स नॉमिनेटिंग फॉर फ्यूअर वुमेन ड्यू टू रिसोर्स एंड नेटवर्क बायसेस. तो जेत आपण मानकर रिसोर्स अछि आ नेटवर्क बायसेस अछि कोट ना कोट से माने कम फीमेल मानको को नॉमिनेट करबे फॉर द रिप्रेजेंटेटिव. देखो जो भी आपण मानकर कोटा सिस्टम अछि ना तो वॉलंटरीली इफ any party wants to give power to the women or want to represent women in that particular party, then they can also give seat to the women, but they're not giving, right? किसी ना vision अच्छी तो they're not giving. kind of male dominated society जोड़ा कि हमें पढ़ी आसुंदी कि हमर historical patriarchal society still exist in India. तो कोड ना कोड से जिनसे तबे इंडिया रे exist करूछ ही करूछ. तब देखिबा policy blind spot. Critical decisions on healthcare, law, order, and local development continue to be made with limited female voice. कि जोटी female मानकर voice दापो. अरे भाई हमें 50% जदि आप मानकर population अच्छी तो कोट ना कोट मानकर तो voice दरकार only कि आप मानकर population जो अधिक अच्छी तो से मानकर कौन दरकार ना से मानकर decision making रे भी आसी दरकार law making रे भी से माने आसी दरकार. तापर आसे कौन erosion of democratic vitality. माने यदि आप कहे कि participate as a voter being denied as a seat of the decision making can hinder the depending of Indian democracy. तो democracy कोड ना कोड यहाँ पर कौन कोची ना फरक पड़ती कि यदि voter माने अच्छे female अब अपन को अबे ही कहली कि बहुत जगह रे female voter मान को संख्या surplus कर गलन men मान को और equal भी है गलन. that means कि कोड ना कोड political awareness is happening within the females. तापर economic inefficiency. Excluding half of the population from political leadership is seen as inefficient as gender inclusive governance correlates with better social and
इकोनॉमिक ग्रोथ जब जेंडर इंक्लूसिव गवर्नेंस चाहूछ से कोर्ट मान दरकार ना बेटर सोशल आउ इकोनॉमिक ग्रोथ दरकार फॉर बोथ हैंड फॉर मेल एंड फीमेल ओके वे फॉरवर्ड आम कौन कर कौन कौन आम कर कि केमी भाव में आमर आम कंट्री रे फीमेल मान रिप्रेजेंटेशन बढ़ा जाई पारिबो फर्स्ट होची डीलिंकिंग फ्रॉम सेंसस और डिलिमिटेशन आमको माने कौन पाई खाली लेजिस्लेटिव माने बा मैं जो आपण माने कहली सब जो आपण मानकर पार्टीज अछि व्हाई दे आर नॉट ब्रिंगिंग देयर फीमेल कैंडिडेट तो माने कौन पे नॉमिनेट करे पे दो नांती तो लेजिस्लेटिव पीपल लाइक द failed 135 should continue to seek ways to implement the quota without waiting for the next census the next census for the wait न करके voluntarily parties should come forward they should give कि भाई 30% तो हमें फीमेल मानक के नॉमिनेशन करे पे दो फीमेल मानक रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ इफ देखो जदि हमको रिप्रेजेंटेशन हमको कोटा दरकार ही कौन पे पड़ेगा व्हाई बिकॉज पार्टीज आर नॉट डूइंग दैट देयर इज आल्सो पेट्रियर्कल माइंडसेट तो हमको जदि पार्टीज माने जो भी अच्छी तो जदि पार्टीज माने निबे ही कहबे कि नहीं फीमेल मानक को रिप्रेजेंटेशन हमें दबा फीमेल मानक को हमें आगु को आनिबा फीमेल मानक को नॉमिनेशन करेबा ताले कोड ना कोठी एजेंसी तो ऑटोमेटिकली हो जाइतांता ना तो जदि वो एबे 131 बिल आपण मानकर पास हे परनी स्टिल वॉलंटरली कोर्ट ना कोर्ट समस्त पदक्षेप नवा दरकार सो दैट कि हमें जिंस को कोटा सिस्टम को इंप्लीमेंट कर परिबा विदाउट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सेंसस तापर स्ट्रेंथनिंग लोकल कैडेट इन द लेवल इन द सक्सेस ऑफ एनआरएलएम as जो SHGs to create a pool of politically trained women ready for state and national roles तो बहुत द क्रिटिसिज्म आसे कि वोमेन मानक गवर्नेंस विषय पॉलिटिक्स विषय पॉलिटिकली केमती काम करा जाए जो भी आपण मानकर इंस्टीट्यूशन अछि जहां भी अछि वोमेन डो नॉट हैव द अवेयरनेस अबाउट तो से माने एई सब थ्रू से मानक अवेयरनेस बढ़ा दे परबो से मानक शिक्षा दिया जाय परबो ताको सिखै दिया जाय परबो हाउ टू परफॉर्म कि गवर्नेंस केमती काम करछि तापर आसिला पार्टी लेवल रिफॉर्म्स में दरकार पॉलिटिकल पार्टीज शुड वॉलंटरली अडॉप्ट इंटरनल कोटास फॉर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन टू शो कमिटमेंट बियॉन्ड legislative mandate. Then institutionalize mentorship, create support system and financial pool to help women overcome the resource intensive barriers and of the electrical politics. जो आपण माने समझते ही जानते कि आपण मानकर जो हमर जो इंडियन पॉलिटिक्स अछि तो कोर्ट ना कोर्ट इंडियन पॉलिटिक्स डिपेंड्स ऑन द मर्शल पावर एंड मनी पावर तो मर्शल पावर एंड मनी पावर जदि फीमेल मानक पाखरे नाही तो कोर्ट ना कोर्ट सेमान को कोन हो ना इंस्टीट्यूशनलाइज मेंटरशिप प्रोवाइड करा जो सो दैट कि सेमान जो रिसोर्स सेंसिटिव बैरियर अछि फॉर द इलेक्ट्रोकल पॉलिटिक्स सेबे सेमान आसी परबे तापर पब्लिक अवेयरनेस हबा दरकार बिल्ड इन नेशनल कंसेंसस ऑन नेसेसिटी ऑफ द कोटा टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग व्यूड सोली ऑन द पार्टीशन इश्यूज ओके तो पब्लिक मानकर अवेयरनेस हबा दरकार नेशनल कंसेंसस दरकार नेसेसिटी फॉर द कोटा तो नेशनल कंसेंसस आनिबा दरकार conclusion तुम लिखि परिबो India's democratic journey remains incomplete as long as half its population is confined to the role of the voter rather than leader. The immediate implementation of women's reservation is not merely an act of fairness but a non-negotiable step toward building a resilient and truly representative democracy. Delaying this reform any further risks stalling the very social and economic transformation India seeks to achieve. Okay, एमती करके तमे कंक्लूजन लिखि देबो एटा होचे मानकर क्वेश्चन डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी तो फर्स्ट लिखियो कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन माने कोन और व्हाट इज द इंपोर्टेंस एनालाइज द रोल ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन स्ट्रेंथनिंग these institutions outline measure for long term institutional reforms तो जोटा कि 15 मार्क्स रो क्वेश्चन अछि एको समस्त पिल्ला माने लेखिया पई चेष्टा करबो एवरीडे इफ यू राइट तले कोट ना कोठी आपण मानकर बेनिफिट हबो कोट ना कोठी आपण माने बेटर परफॉर्म कर परबे इफ यू डू नॉट राइट क्वेश्चन तले आपण मानको प्रॉब्लम हबो बुझ पाले कि नहीं तो सब बेले आपण क्वेश्चन को आपण सब बेले लेखिया को चेष्टा करंतु हला जेता आपण अधिक क्वेश्चन लिखिबे तो आपण मानका बेनिफिट हबो तापर आसले कि अटल बस स्टैंड स्कीम तो अटल बस स्टैंड स्कीम जोटा कि ओडिशा गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करा है तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा लॉन्च द अटल बस स्टैंड स्कीम टू मॉडर्नाइज एंड स्टैंडर्डाइज
how terminal infrastructure, standardized bus terminal infrastructure across the state, strengthen public transport connectivity. तो कौन कौन पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट अच्छी ताको हमें कनेक्ट करने पे पड़िबो. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इज आल्सो रिक्वायर्ड. तो मैं कोड लिखि परिबो, एटो में एनवायरमेंटल भी लिखि परिबो, इकोनॉमिक भी लिखि परिबो. ओके, पेपर 3 रे, जीएस पेपर 3 रे, जीएस पेपर 3 रे आस परिबो कि नहीं? यस. तो जते अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हबो पिला माने सेते अधिक कम आपण मानकर पर्सनल व्हीकल विल बी यूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स. और जते आपण मानकर पर्सनल व्हीकल यूज कम हबो तो पॉल्यूशन कोट ना कोठी कमिबो. आ गोटे जिंस लगी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अछि दैट इज मच चीपर. तो आपण देखिबे ओनली द प्रॉब्लम इज कि ट्रैफिक को टिके रेगुलेट करर अछि. तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा लॉन्च्ड द अटल बस स्टैंड स्कीम. So what was the scheme? Bus stand scheme aims at the construction, renovation, operation and maintenance of modern bus terminals across the state to improve passenger facilities and transport efficiency. Transport can be efficiently कराई करे. यानी transportation में हमको efficiency दरकार. हमें जते माने भलरे आ comfortable जदि हमें कोनो से जिंस जदि गवर्नमेंट कोनो से जिंस हम बाकी क्रिएट को जदि हम कदि comfortable होबो for the passengers ताले लोकमान से जिंस को अडॉप्ट करबे. implementing agency की मन रखे पई पड़िबो, implemented by the Odisha State Road Transport Corporation. तो OSRTC जो अपन जानि चंती तो सेही को implement करबो under the supervision of Department of Commerce and Transport. ताको सुपरवाइज के करबो ना Department of Commerce and Transport. तो Department of Commerce and Transport is going to supervise. Fine. तापर हमें देखिबे कि weakening of the Atlantic Mediterranean overturning circulation. ओके, देखो तो जो भी हमरो ज्योग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन अछि तो कोड ना कोठी जदि आपण माने देखिबे को जगह रे आपण मानन को एमटी लागियो कि को जगह रे आपण मानन को बेटर, को जगह रे आपण मानन को कोल्ड वाला अछि, को जगह रे आपण मानन को कोन अछि ना वार्म वाला भी अछि. ए जिंस को बुझियो पूर्वरु आ गोटे जिंस आपण मानन को बुझियो दरकार जोटा कि हैला thermohaline circulation. thermohaline circulation. ओके, तो thermohaline circulation को आपण को बुझिया पई का पड़िबो. thermohaline circulation माने कोन ना जोठी आपण मानकर कोन थिबो ना टेम्परेचर माने थर्मो आ हेलाइन माने कोन सैलिनिटी. तो टेम्परेचर आ सैलिनिटी ऊपर जो सर्कुलेशन डिपेंड करते. थर्मो माने कोन, थर्मो माने होछ आपण मानकर टेम्परेचर आ हेलाइन माने कोन ना सैलिनिटी. ओके, तो देखो जते बेले कोनोसी भी जगह रे सपोज कि आपण माने गोटे इमेजिन करंतु जदि एठी अछि कि अटलांटिक माने अटलांटिक मेडिटेरियन माने जो मेडिटेरियन अछि जो मझी जगहटा ओवरटर्निंग सर्कुलेशन. तो सर्कुलेशन कोड ना को जगह रे होछ. तो जो भी आपण मानकर अटलांटिक वाला जगह अछि ना सेठी कोन होछि जदि वेस्टर्न वाला कंट्री आपण मन जानि छथि तो सेठी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कोल्ड थाए. तो जबे गल्फ ऑफ स्ट्रीम गोटा अछि तो गल्फ ऑफ स्ट्रीम को समान कोन होती ब्लैंकेट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज. दैट मींस कि ये जो वाटर अछि ना तो गरम वाला वाटर अछि ताको नै कि से कोड ना कोड सेठी मिक्स करे. ओके, मिक्स हला परे मिक्स हला परे पुण आउतो ताको फेरी कि आसे ताको हमें भी देखिबा कि कोन कोन दर माने केमती सेटा काम करछि. तो फास्ट होछि कोन ना फास्ट होछि आपण मानकर heated and mixed water rising on the surface. जदि कोनोसी जगह रे सपोज कि आपण मानकर जोटी कि सपोज कि मझी जगह रे कोन अछि इक्वेटर रे अछि इक्वेटर. तो इक्वेटर जगह रे जदि आपण जानछन्ते सन रो रेज ता बहुत ज्यादा अधिक आसीबो. तो एई जगह रे कोन हबो ना एई जगह जो पानीटा अछि से पानीटा कोन हबो ना हीट हबा स्टार्ट करिवो आ मिक्स हे कि ऊपर को उठिबा स्टार्ट करिवो. तापरे इंक्रीजिंग सॉल्ट लेवल ड्यू टू द इवापोरेशन. तो जदि एठी पानीटा गरम हैला सपोज एठी वाटर अछि वाटरटा जदि गरम हैला तो जदि एटा गरम होबा स्टार्ट हबो ताले कोन हबो जो सनराइज आसिला सनराइज रेटा गरम होबा स्टार्ट करला ताले इवापोरेशन हैला कि नै. जतबेले एठी इवापोरेशन हबा स्टार्ट हबो तो सेलाइन जो आपण ओशन अछि ओशन रे तो सॉल्ट अछि सेलाइन वाटर. तो सेठी कोन हबो ना सॉल्ट रहि गेला. जतबेले सॉल्ट हे जिवो ताले कोन हबो ना सॉल्ट ताको तळु को कोन करबे हेवियर करबो सेमाने तळु को बसिया को स्टार्ट करबे. ओके, तापर कोन हबो ना वाटर इज कूल्ड. तापर धीरे धीरे तळु आसला पर वाटर कूल हबो.
कूल होला पर कोन हबो ना सॉल्ट फ्रॉम द फ्रीजिंग वाटर तापर आउथरे कोन हबो ठंडा हे साला पर सॉल्ट फ्रॉम द फ्रीजिंग वाटर एटी मिसियो को स्टार्ट हबो तापर आपण मानकर पुणी आउथरे एटी कोन हबो ना गरम वाटर कोनला ऊपर उठिया स्टार्ट हबो ओके तो जेमति आपण मानकर कन्वेंशन मतलब जो करंट आपनकर अछि जकर गरम वाटर जकर आपण पानी पकोचंती तो गरम रेमति तळुक आसीबो आसी साला पर पुणी गरम ऊपर ऊपर आसी तो सेही बले आपण मानकर सर्कुलेशन हे चली जा फल कि बालांस मेंटेन हो जदि भाव कि ये जो सर्कुलेशन न हम ताले कोट ना कोट से जो पोर्ट अच्छी जहाँ भी सब फ्रीज हो ना बरफ हो तो कौन इकोनोमी भी खत्म माने बंद हो सहित माने अडाप्टेशन भी ह्यूमन बीइंग से मात्रा है नहीं तो आप वार्म वाला टेम्परेचर आल्सो रिक्वायर्ड तो रिसेंट स्टडीज हैव वार्न्ड दैट Atlantic Mediterranean overturning circulation by MO is declining and may be approaching an irreversible tripping point. तो एटा कोन छै धीरे धीरे डिक्लाइन हबको लागलानी ए जो अपन मानकर सर्कुलेशन मेथड अछि तो कोट ना कोठी सर्कुलेशन मेथड डिक्लाइन हबको लागलानी आ मे बी इनरिवर्सिबल ट्रिपिंग पॉइंट तो इनरिवर्सिबल हे सलानी कि आ से जगह को फेरी आसीबो के नाही ओके तो फास्ट हम जानबा कि एमओप माने कोन the large scale ocean circulation system in the Atlantic Ocean moving warm surface water northward and cold deep water southward तो northward को अपन मानकर कोन हबो ना जो अपन मानकर warm water अछि से ऊपर को जीवो माने north side को आ cold माने कोन जोटा अपन को pole side अछि तार cold water टा southward को आसीबो को स्टार्ट करबो conveyor system कोन ना function is a global ocean conveyor belt redistributing heat between the equator and the poles बुझबाच काम कोन करिवो ना रीडिस्ट्रीब्यूट करिवो जदि एटी बहुत ज्यादा ठंडा अछि एटी नै कि गरम पहुंचीबो एटी बहुत ज्यादा गरम अछि तो ता कोड ना कोड कोल्ड वाटर आनी कि पहुंचौछि तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग कि रीडिस्ट्रीब्यूट करवा स्टार्ट करछि हीट बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स तापर कोन अछि ना डेंसिटी ड्रिवन कंट्रोल बाय द टेंपरेचर थर्मो एंड सैलिनिटी अलाइन डिफरेंस it is thermohaline circulation तक हम कोन करछंती thermohaline circulation ओके कॉजेस कोन अछि कोन कॉजेस अछि कि एमो केबे वीक हेलन प्रथम अछि ग्रीन हाउस गैसेस की बॉडी बॉडी चलछि तो ग्लोबल टेंपरेचर इंक्रीज होछि ग्रीन हाउस गैसेस इज इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेंपरेचर तो जेकला अपन मानकर ग्लोबल वार्मिंग बॉडी तले कोन हबो ना बेसी ज्यादा जेकल टेंपरेचर बॉडी लेबा ग्लोबल वार्मिंग हेला कोठ ना कोठी अपन मानकर मेल्ट हवा स्टार्ट करबो ग्लेशियर और ग्लेशियर जते अधिक मेल्ट हबो से आसे कि फ्रेश वाटर आसे कि मिसिबा स्टार्ट करबो तो कोठ ना कोठी कंपोजिशन को चेंज करछि concentration and rising the global temperature fresh water include melting greenland ice sheet add fresh water to the north atlantic disrupting circulation dynamics salinity reduction हमको लागुछि fresh water influx lowers ocean salinity and density weakening deep water formation deep water जो जाउतला तार formation को कोट ना कोटी कमै देलनी तापर इम्पैक्ट कोन पकिबो जदि आपण मानकर एमओ का यदि वीकेंड होछि ताले इम्पैक्ट कोन पड़िबो ना एटा कोन करबो ना एमओ कोलैप्स वुड रिलीज 47 to 83 gigatons of CO2 into the atmosphere जदि एटा कोन हबो ना कोट ना कोन इम्पैक्ट पकमेबो कोन ना एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड ये कोन करबो रिलीज करबो स्टार्ट करबो कार्बन सिंक शिफ्ट the southern ocean may shift from a carbon sink to a carbon source due to upwelling of carbon rich waters जति अपवेलिंग माने कोन जब पानी आसीबो तको ऊपर को बढ़िबा स्टार्ट करी तो कोठी ना कोठी एमने कोन सिंक हे किथिला ना तो जति सेठी बहुत ज्यादा सदन जे जदि इनफ्लक्स जो रेट रे होतला से इनफ्लक्स रे चेंजेस आसिला तो सेठी जो कार्बन सिंक हे रोतला से कोठ ना कोठी आउथरे कार्बन से तो बाहरबा स्टार्ट करबो कना दैट वाटर इज कार्बन रिच वाटर then global warming additional CO2 may contribute to the less approximately 0.2 degrees Celsius in rise in the global temperature जदि यदि आसी की मिसिला तो कोट ना कोठी CO2 आउथरे कोन करबो ना ऑलरेडी द टेंपरेचर बढ़िछि मेल्टिंग हवा स्टार्ट हेलानी आउरी ग्लोबल टेंपरेचर बढ़ियो को लागबो आर्कटिक कूलिंग हवा स्टार्ट हबो नॉर्दर्न रीजन्स में एक्सपीरियंस approximately 7 degrees Celsius cooling due to reduced heat transport हेगला अंटार्कटिक वार्मिंग southern regions तो अंटार्कटिक वाला भी southern region में वार्म by 6 डिग्री सेल्सियस अप टू 10 डिग्री सेल्सियस locally polar contrast will start temperature difference between the northern and southern hemisphere sea ice feedback increase arctic ice ridges albedo amplifying cooling positive feedback loop देखो albedo माने कौन जानछो ना नहीं
रेजेस मान जदि आपण मानकर इंक्रीज हे जिवो जोटी आपनकर आइस जगह थाए ना से जगह कोन हुए ना सन रो जो एसिड रेज को रिफ्लेक्ट कर दे ओके रिफ्लेक्ट कर दे तो जोटा कि आपण मानकर एठी कोन हबो ना आर्टिक्स आइस में जो रेजेस कोन हबो एल्बिडो को और बढ़ाई देबो एम्प्लीफाइंग द कूलिंग तो ऑलरेडी कूल अछि और जहां भी आपण मानकर सन रेज आसले सबोडा का डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हे गेला विदाउट हीटिंग तो ताने कोठी ना कोठी जिंस कोन हबो ना आहुरी अधिक आपण मानकर सेटा कूलिंग इफेक्ट को इंटेंसिफाई करबो तापर हम देखिए कि मेमिस्टर्स फॉर एनर्जी एफिशिएंट एआई तो एनर्जी एफिशिएंट एआई पाइंका मेमिस्टर्स जदि भाबे कि मेमिस्टर्स माने कोन तो जो जिंस के कोन करबो मेमोरी रहितो जो रजिस्टर माने थिला आगु जो रजिस्टर थिला से कोन करबो पास्ट एक्टिविटीज को भूली जाउथिला बट मेमिस्टर गोटे एमटी मेमिस्टर गोटे एमटी जिंस जोटा कि पास्ट एक्टिविटी को से जो रजिस्टर अछि तो पास्ट एक्टिविटी को मन रखिबो जेंति इमेजिन करो गोटे पाइप अछि ओके इफ देयर इज अ पाइपलाइन तो पाइपलाइन में आपण केमती पानी दउचंदी 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 तापर आपण माने से पाइपलाइन नो काली जगह पर बंद कर देले आउथरे पाइप आसले पुण आउथरे पानी आपण प्रेशर देबा स्टार्ट कर एबे जे पाइपलाइन ले आपण माने बहुत ज्यादा पानी देबा स्टार्ट करबे तो पाइपलाइन ता कोट ना कोट एक्सपांड करबो पाइपलाइन ता कोट ना कोट एक्सपांड करबो आ जते बेले आपण पाइपलाइन रे कम वाला जखन आपण पानी देबे सेते बेले कोन को ना पाइपलाइन ता सिंक करबो जो जिनसटा जो प्रोसेसटा कंटिन्यू होतबो आ ताको से सबले मन रखुतबो ओके मेमिस्टर माने भी सेटा जतबेले कि आपन जो रजिस्टर अछि रजिस्टर रे कोन अछि ना मेमोरी बेस्ड हेते दरकार मेमोरी बेस्ड रजिस्टर ताको हम कहउछन्ते मेमस्टर ओके तो इमेजिन करो गोटे पाइप अछि तठी आपन आपन कोन वाटर एठी एटू आपण वाटर कोन कले इन दबा को स्टार्ट कले यदि अधिक वाटर देले तो पाइप रे कोट ना कोठी एक्सपांड हबो जदि आपण कम वाटर देबे ताले से कोट ना कोठी सिंक हे जिवो आउ जदि आपण एटा ऑफ करि पळेले ताले से नॉर्मल वाला स्टेज को आसी जिवो बट नेक्स्ट जदि आपण काली करिवो ताले दैट रजिस्टर रिमेंबर्स द पास्ट एक्टिविटीज बुझि परछ कि नै ताका हम कहउछन्ती मेमिस्टर जोटा कि एनर्जी आपण मानकर सेव करबो एआई रे तो कैम्ब्रियन रिसर्च डेवलप a stable hafnium oxide memister that may reduce AI energy consumption. Memisters are electronic device that regulate current flow while remembering past change flow. तो जो अपन मनकर रजिस्टर थिला तो रजिस्टर कोन करथिला ना तार जो पास्ट चेंजिंग फ्लो होता ताको से भूली जाउथिला बट मेमिस्टर ताको मन रखिबो दे आर द फोर्थ फंडामेंटल सर्किट एलिमेंट alongside the resistor capacitor and inductor so hafnium oxide memisters mimic biological synapse in which storage and processing occur within the same local unit biological synapse माने जेमति हमर ब्रेन फंक्शन करछ बुझ परछ ब्रेन ले तमे किछि जिंस पढिलो जानिलो ताको मन रखिलो पुणी कम पढिलो कम मन रखिलो ताले सेटा थोड़ी ना हम सब मन भूली जाउछ पास्ट तमर जहा अछि ताको मन रखुछ से बडा बायोलॉजिकल सिनाप्स को से मन रखिबो किए मेमिस्टर this reduces the one mnemonium bottleneck in which AI system waste energy transferring data between separate memory and processing unit तो धीरे जाके बड़ा आपण मानकर अलगा अलगा थिला कि बिटवीन कि मेमोरी सेपरेट मेमोरी रे से कोन करथला सेव कर रखथला डाटा जतबे सेटा कोन होथला ना एआई वाला जिंस आसुथला बट एठी कोन होची प्रोसेसिंग यूनिट आ मेमोरी यूनिट अलगा थिला एटा सिंगल हबो की फीचर्स हला नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स and retain data when power is removed जदि आपण मानकर पावर रिमूव भी हे गेला फिर भी से डाटा को रखिबो मेकिंग देम आइडियल फॉर इंस्टेंट ऑन स्टोरेज सिस्टम एप्लीकेशन एटा ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग ही परिबो कंपैक्ट मेमोरी ही परिबो जो आपनकर आईटी जो जिंस अछि आईटी रे आईओटी रे से आपण डेवलपमेंट कर परिबे एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स हे गेला हेल्थ वेरिएबल्स हे गेला सिक्योर हार्डवेयर सिस्टम हे गेला ई जगह रे ही परिबो दे कैन बूस्ट एआई machine learning and reduce AI energy used by up to 70%. तो जो आपण एनर्जी वेस्ट हो जाउतला बिकॉज़ कि हमको डबल वे रे फंक्शन करे पे पड़तला बहुत आपण मानकर डाटा और प्रोसेसिंग तो एनर्जी को से स्टोर करि पारिबो ओके तापर तापर आपण मानकर आसला जेनेरिक ओरल सेमोग्लूटिव अप्रूव्ड इन इंडिया तो ए जो आपण मानकर जो डॉक्टर रेड्डी कंपनी आपण मन जानिथिबे सेतिर लैबोरेटरी कोन होची सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जेतिले तो से माने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट जेनेरिक ओरल सेमाग्लूटाइड टैबलेट को कोन हला ना
ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି approval ମିଳିଛି କି Dr. Reddy companies or laboratories you can regulate that. So semaglutide is an anti-diabetic and anti-obesity medication. Okay, तो जो मानकर BMI body mass index अधिक अछि जो माने obesity अछंती सेमानक पयका आ जो मानको डायबिटिक होछि सेमानको एंटी डायबिटिक एंटीबायोटिक हबा को दबनी आ ओबेसिटी भी हबा को दबनी used to treat type 2 diabetic, manage weight and reduce cardiovascular disease. जदि weight वाला reduce हो गला तो कोट ना कोट cardiovascular also is going to be reduced. Classification कौन ना belong to the GLP-1 receptor agonist class used for metabolic disease management. तो metabolic disease माने कौन जोटा कि आपण माने metabolic ऊपर एक impact पकाए. डायबिटिक होछि ना माने कोट ना कोट बॉडी रो मेटाबॉलिज्म जोटा अछि ना से रेट आपण मानकर कोट ना कोट कमी छै. ओबेसिटी होछि माने मेटाबॉलिज्म कोट ना कोट कमी छै. मेकानिज्म कोन ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड जोटा कि आपण जीबीपी ए हार्मोन that enhances insulin secretion, delays gastric emptying and suppresses the appetite. तो appetite को से कौन करे suppress कर. तो जदि आपको भोक ही लागिबनी तो ऑटोमेटिकली आपण मानकर कोन हबो ना वेट को आपनकर रिड्यूस हे जिवो ओबेसिटी आपन को रिड्यूस हे जिवो. तापर असले सिग्निफिकेंस कोन द जेनेरिक अवेलेबिलिटी एट्स इंडिया बैटल अगेंस्ट राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो ये जो डायबिटिक हे गला ओबेसिटी हे गला बा कार्डियोवास्कुलर डिजीज हे गला दिस आर नॉन कम्युनिकेबल दैट मींस इट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम मी टू समबडी एल्स. ताको जदी हे छि तातो आगन को ट्रांसफर हबनी. तो एटा जेनेरिक अवेलेबिलिटी हबा दरकार. जेनेरिक हेले कोन की आपण को माने टिके लॉन्ग टर्म इफेक्ट फॉरेन ईयर इंपैक्ट आसबा बट इट इज गुड आउ माने कॉस्ट इफेक्टिव. आ जदी आपण देखिबा कि जदी आपण माने जो आपण के पढिले सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विषय टिके जान दबा काहे ना कोन एबरे भी पचरि पारे कि केबे एस्टैब्लिश अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक आर्टिकल एक्ट ऑफ 1940. तो 1940 रे एटा थिला सेतबा हमर इंडिया इंडिपेंडेंस ही नथिला. तो जदि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 regulates pharmaceuticals, medical devices and cosmetics within the Ministry of Health and Family Welfare. तो Ministry of Health and Family Welfare भितर ही एटा काम करछ. ओके, राइज इन द पेटेंट फाइलिंग इन इंडिया. तो पेटेंट केतेबेले मिले जेतेबेले आपण कोनोसी गोटे यूनिक जिंस तयारी करथोंती तो से जिंस ऊपर आपण को पेटेंट राइट मिले. India's patent filing increased to 30.2% and to 1.43 lakhs in financial year 2025-26, reflecting the rapid expansion of innovation ecosystem. Right? तो जब आपण कोनो जिंस नुवा आपण माने इनोवेशन करंती ना तापर आपण पेटेंट मागंती कि भाई एटा मु सोली करेछि and if any other company or anybody wants to do such type of innovation they have to ask me first. तो सेटा ही आपण मानकर एक्सक्लूसिव राइट. पेटेंट माने कोन कि आपण को एक्सक्लूसिव राइट मिलला कि भाई ए जिंसटा इट वाज इनोवेटेड बाय मी. एक्सक्लूसिव दोटा आपण को राइट मिलला. ओके, तापर देखो तो कहीं बॉडी चलची जोटा कि भलो. तो पेटेंट इकोसिस्टम के कोन हेछि ना डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन केते ओवर 69% ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस आर फाइल्ड डोमेस्टिकली इंडिकेटिंग राइजिंग इंडिजिनस इनोवेशन कैपेसिटी. तो जो गवर्नमेंट चाहूँ कि आम कंट्री रे इंडिजिनस इनोवेशन कैपेसिटी बढ़ो बोली तो कोट ना कोट एटा बढ़ी छि. सेकंड है कि ग्लोबल रैंकिंग इंडिया हैज एमर्ज्ड एज वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर. तो सबुठु केते नंबर अछि बे इंडिया 6th. इकोनॉमी रे भी 6th अछि, पेटेंट रे भी 6th अछि. स्टेट वाइज रैंकिंग जदि देखिबा स्टेट्स लाइक तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र लीड द पेटेंट फाइलिंग. गवर्नमेंट इनिशिएटिव अछि. पॉलिसी मेजर्स इंक्लूड reduce fees, expedite examination, support for startups, MSME, academic institutions. तो ये सब जगह आपण मानकर गवर्नमेंट इनिशिएटिव पाई पेटेंट भी बढ़ुची. ease of filing, pro bono facility schemes assist startups in filing patent, trademarks and design applications. significance कोन pro bono माने कोन फ्री रे जो हम करबो pro bono केसेस जेमति थाय जो माने अफोर्ड करबो ना तो माने फ्री रे फैसिलिटीज अवेलेबल करबा. significance for rising patent filing reflect India's transition towards a knowledge-based economy driven by innovation and research and development. Okay, significance भी यार अच्छी. A patent माने कौन हम जाने कि यदि patent विषय जानो चाहते what is patent? The patent माने कौन जानिबा? The patent is an intellectual property right granted to an investor to exclusively use, make, sell an invention for a specific period. ओके, गोटे स्पेसिफिक पीरियड पे ताको दिया जाबो कि भाई जदि तमे जिंस तयारी करछो तो एंड ओनली यू कैन मेक यूज ऑफ इट, यू कैन मेक
or you can use and you can sell up to 10 years. Okay, so the specific time पे देखो दिया जाएगा. Legal basis कौन होची ना India patents are governed by the Patents Act 1970. Objective कौन patents aim to promote innovation by rewarding investors while encouraging disclosure of new technologies. Criteria are कौन रहेगा and invention must be novel, involve an incentive state and industrially applicable to qualify for a patent. A patent is generally granted for 20 years for the date of filing. So duration basically केते वर्ष में दिया जाउची 20 वर्ष में हमको patent दिया जाउची for the date of filing. जब आपण फाइल करछन सेबेटू 20 ईयर पर्यंत आपण पाखरे एक्सक्लूसिव राइट अछि कि से एक्सक्लूसिव राइट रो माने कोन ना आपण माने ताको यूज कर परबे मेक कर परबे और सेल कर परबे for the 20 years. After that anybody can do that. Okay, तो एटा अछि एक्सक्लूसिवली राइट दिया अछि कारण जणे जने इनोवेशन करिछि R&D रे खर्च करछि बा इंटेलेक्चुअली तार से जिंस कैपेबिलिटीज अछि तो तार प्रॉफिट ताको ही नमको दिया जाओ ना for 20 years. After that other can be used. Okay, तापर हम देखियो ओडिसा रे कोटे जिंस ओलिव रिडले टोटल lays eggs in Odisha blue flag beach. Okay, तो ओलिव जो रिडल टिटल अछि सी टोटल laid 114 eggs on the blue flag beach in Puri, Odisha. तो ओडिसा रे पुरी रे अछि देखितो ना पुरी रे ही चेंजेस अछि जदि अपन देखिबे कि ओलिव रिडले जो टोटल अछि से माने आरिबटा करंती तो कोठी देबे एग तो केबे पुरी आसेनी तो न्यू सेटमेंट एति मन हेडा अछि न्यूज एबे आछि बहुत रेयर कि पुरी रे जो अपन मानकर ब्लू फ्लैग बीच अछि सेठी 114x हाईलाइट कोन सपोर्ट द सेफ नेस्टिंग ऑफ to support the safe nesting of olive ridley turtles along the coastline. The authorities have already established at least 3 hectare hatcheries from the Devi River mouth to Puri. These hatcheries are designed to protect the eggs until they hatch. जते पर्यंत से हैच हेनी बा ता जो स्टार्ट हेनी पिला बारबा सते पर्यंत ताको कोन करबो ताको प्रोटेक्ट करा जो बहुत यूनिक जिंस ओडिसा रे छि पुरी रे. So mass nesting करंती को माने आरिबटा रे olive ridley turtle begin their annual mass nesting आरिबटा ताको कोनती on the Odisha coast in early 2026 with thousands arriving at the major site like Garimata and Rusikala following record breaking 2025 season were over 7 lakhs. तो Garimata आउ आपण मानकर रुसिकला जगह से माने कोन करंती मेजरली से माने अराइव कला परे सेही जगह रे ही जांकी त माने एग ले करंती जोटा कि 2025 रे केते हितला 7 lakhs which is more. Turtle nested at Rusicalia conservancy are actively protecting the site from disturbance. So disturbance जल्दी न हो. Olive Brittle named for the their olive green sail और carapace ताको कोनती ऊपर वाला जो जोटा भी आपण मानको देखिथिबे जो कच्ची मर ऊपर वाला जो जगह ताको कोन कोनती carapace कोनती thrive in the warm waters of the Indian Ocean, Pacific and Atlantic. तो characteristics कि ordinary turtle कोट रही परिबे और जो warm water थिबो तो the Indian Ocean, Pacific and Atlantic. तापर देखिए कि they primarily feed on jellyfish ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି, shrimp ଖାଆନ୍ତି, snail, crabs and fish eggs. Conservationists estimate that only 1 in 1000 hatchling survives to adulthood, which the rest falling prey to. Okay, बाकी देखो एमाने बहुत ही मात्रा रे कोन करंती ना बहुत ही मात्रा रे माने कोन करंती देखो जो कोस्ट अछि तो इट वाज कोस्ट अछि कोस्ट रे माने आसीबे आसी के एपड़ एरिया रो सब फांका अछि ना ए जगह सब माने नेक्स्ट सब माने कोन एक सब लेक करते आ बहुत मात्रा रे करंती बट जते बेले कोन होने से माने कने रिटर्न करंती आसीले बेले ना तो ए जो जगह अछि ना बर्ड्स माने माने सब खाइ जानते. ओके, तो नेचर देखो केते ब्यूटीफुली बनै छी कि यार पॉपुलेशन भी बढ़े के गौने बट मेनेज रे से जन्म हे बट से कोड ना कोड से माने आउ नगर खाद्य हे जबे. ओके, तो केते बड़े ओनली 1 in 1000 hatchling survives. Predators including jackals, birds, hens, feeder crabs, stray dogs, some fishing activities like trolling एमान को द्वारा समान को नष्ट हो जानते only 1 out of 1000. This high mortality rate is partly offset by large number of eggs a single female can lay. केते कई बार गोटे single female ना 80 to 120 legs, sometimes twice a season, enhancing the chance of hatchling survival. तो दी थरा अपन मानकर सीजन लेग्स माने एक परसेंट तले बेसी चांसेस अछि कि हैचलिंग को सर्वाइव करे पाए. ओके, तापर कन असले अबाउट ओलिव रिडले टर्टल तुम से जाने पे चाहिबा कहना जे तो अपन मानकर न्यूज रे अछि तो फास्ट इन लीगल स्टैंडर्ड कोन अछि द शेड्यूल 1 वाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल 1 रे अछि माने
हाईएस्ट प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 अच्छे माने हाईएस्ट प्रोटेक्शन ताको दिया जिवो तापर असला आयुष्मान स्टेटस हला वल्नरेबल साइट्स रो अपेंडिक्स 1 अछि ता माने कोन साइट्स कोन करे ना माने कोन रेस्ट्रिक्शन लगे कि ट्रेड रे तो ट्रेड भी हे परबनी कंजर्वेशन मेजर्स कोन अछि ना इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट ऑपरेशन ओलिविया एनुअली टू प्रोटेक्ट नेस्टिंग साइट्स तो जो आपण मानकर इंडियन कोस्ट अछि से माने ऑपरेशन ओलिविया प्रोटेक्ट माने सबले एनुअल परफॉर्म करते सो दैट कि दे कैन प्रोटेक्ट नेस्टिंग साइट्स हैला तापर habitat protection कोन मैंडेटरी यूज ऑफ टोटल एक्सप्लोडेड डिवाइस इन फिशिंग ट्रॉलर्स यूज करबे पड़ियो ओडिशा बायोडायवर्सिटी बोर्ड हैज कैरिड आउट ए preliminary survey by scientists and resources along Kosivusikulya river mouth sea beach following the submission of a proposal by the Barampur Forest Division seeking biodiversity heritage sites tagged for approximately 747 hectare area in and around the olive ridley mass nest site. तो ये सब जिनसे government needs. Major nesting site है गहरी मठा recognizes world largest nesting ground. Rusikalya major highly active nesting beach in the Ganjam district. Okay, third है Devi river mouth another critical habitat. तो ये तीन दिन सब जगह मानकर habitat. Okay, तापर अपन मन असले कोन ओडिशा कांपा फंड तो ओडिशा कांपा फंड भी रिसेंटली न्यूज़ देथिला कांपा पैनल अप्रूव्स 1022 crore annual plan for 2026-27 the proposed plan includes compensatory afforestation across 5450.6.3 hectares तो जदि आपण माने एनवायरनमेंट को कोठना कोठी कोन जिंस आपण करंतु जो का एनवायरनमेंट को इंपैक्ट होवे तो सेते आपण माने को कोन हबो कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन करिया पाइका कांपा फंड आपण माने को कंपेंसेटरी पछिबा पई पड़िबो इन प्लानिंग अथॉरिटी कांपा इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी दैट को बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज established in 2016 to manage the funds 2016 लेटर एस्टैब्लिश कराइतले कि फंड को केमते हम मैनेज करबो कांपा फंड कलेक्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट पर्पस जदि कोनोसी गोटे फॉरेस्ट लैंड को आपण माने नॉन फॉरेस्ट पर्पस रे यूज करे पे चाहू छी तो कोट ना कोट यू हैव टू कंपेंसेट एफोरेस्टेशन कि एफोरेस्टेशन करा जाओ फॉर दैट यू नीड टू कंपेंसेट इट फैसिलिटेट्स 90% ऑफ फंड्स टू स्टेट for afforestation, wildlife protection and rehabilitation aiming to compensate for ecological loss. जो ecological loss अछि ताको कोट ना कोठी कोन करबो ना ताको पूरा करिया पे चेष्टा करो 90% of the fund to states को से दउथबो की एस्पेक्ट कोन created under the compensatory afforestation fund act 2016 जोटा कि आपण माने करो 2002 रे एससी रो माने सुप्रीम कोर्ट रो डायरेक्टिव थिला fund structure funds are maintained under the public account of India national fund and public account for each state fund utilization हला 90 और 10 रो 90% अपन मानकर स्टेट आउ यूटी के जिवो और 10% ऑफ रिटर्न बाय द सेंट्रल अथॉरिटी पर्पस कोन यार एफोरेस्टेशन करिवो असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन करिवो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एटा होतार पर्पस Key issues called criticism report suggest mismanagement of funds such as spending on non-forestry purpose, lack of tribal gram sabha consultation and ecological concerns are replacing natural forest with plantations. Okay. देखो तब हम देखिबे कि OAS HUB रे जो आपण मानकर बैच स्टार्ट होबा को जाउची जोटा कि आपण मानकर फर्स्ट वीक ऑफ द मे तो फर्स्ट वीक ऑफ द मे रे स्टार्ट होबा जाउची जोथरे कि आपण मानकर जानि जंती कि OAS HUB छोटो बैच रहबो 25 टू 30 स्टूडेंट सेठी आपण मानकर एनरोल रहबे तो आपण मानकर जहां पे डाउट अछि आपण सारा मान सहित कथा हे परिबे सोशियोलॉजी रो जो बैच स्टार्ट होबो जोटा कि आपण ललित सर आपण मान नबा को चाहउचंती तो एठी आपण डेली आंसर राइट जदि आपण जॉइन करे पे चाहउचंती तो पर मंथ आपण को 349 रुपीस दो पे पड़िबो सोशियोलॉजी रो डेली सेतिर आपण आंसर राइट करि परिबे हैला तापर आपण मानकर इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स बैच फॉर ओसीएस भी स्टार्ट हिजबो कंप्लीशन ऑफ प्रीलिम्स कवरेज इन वन कोर्स ओडिशा नेशनल फोकस प्रिपरेशन लाइव क्लास स्टडी मटेरियल मेंटरशिप इफ यू डू मिस द क्लास देन यू हैव द रिकॉर्डिंग्स आपण पाखर रिकॉर्डिंग्स भी रहइबो ओके देखो डिटेल लाइव वीडियो लेक्चर पीडीएफ एंड टू कवरेज बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस रेगुलर एमसीक्यू टेस्ट मेंस राइटिंग अबाउट वीकली करंट अफेयर एंड कंप्लीट गाइडलाइन मेंटरशिप
ओके एमान होचन आपण मानकर एजुकेटर तो जो माने इंटरेस्टेड अछंती तो फास्ट वीक रे आपण मानकर फास्ट वीक मे रे आपण न्यू बैच स्टार्ट होबा पई चाहउचंती बोथ आपण मानकर मॉर्निंग एंड इवनिंग तो जो मानकर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी दरकार से माने आसी थरे थरे विजिट करंतु ओके डेमो क्लास नियंतु जदि पसंद आसुची तापर आपण माने डिसाइड करबो ठीक अछि ओरिजिनल प्राइस जोटा भी आपण थिला जोटा कि आपण 9000 अबव थिला एबे जेटा कमिटी ऑफर प्राइस 2999 रुपीस हे साची फाउंडेशनल बैच जोटा आपण पड़े थैंक यू ओके एटा आपण नंबर अछि आपण कांटेक्ट कर परबो।